Let's start first with establishing our relationship. We've never done anything on camera. So I'm very excited. What does fitness mean to you? I've always been a sports person. आपने कई आला कलाकारों के साथ काम किया है. अक्षय है, आमिर है. आमिर के साथ तो हमने बहुत मस्ती की है. खाना पीना ऐसा खाया है. आप लोग एक सीन कर रहे थे, आई थिंक रंग दे बसंती में. जी और 3 Gs में भी. आप तीनों ड्रंक हो गए थे, वो सीन ही नहीं हो पाए. क्या सच है? थरो प्रोफेशनल. ऑफ कोर्स. इधर उधर थोड़ा हो गया होगा शायद. Ladies and gentlemen, boys and girls, uncles and aunties, चाचा और चाचियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर on my podcast Unstoppable, powered by RiteBite Max Protein. आप जानते हैं मैं बार बार powered by क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग फिटनेस में तो हैं और बहुत अवेयर भी हैं, लेकिन करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, इसलिए आपको पूरा फायदा नहीं हो रहा है. That's why powered by RiteBite. आज के मेरे जो गेस्ट है, क्या कहूँ इनके बारे में. आई हैव नोन हिम सिंस ही वाज 18 years old. आई हैव सीन हिम ग्रो नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग. ही इज फैंटास्टिक. आई मीन आप लोग जब उन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. इन्होंने ढोल, स्टाइल, गोलमाल जैसी फिल्में भी की हैं, लेकिन साथ ही साथ रंग दे बसंती, 3 Idiots जैसी फिल्में की. आई मीन ही इज अ मैवरिक, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर. ऑफ कोर्स एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग, बट जब वो क्राइम थ्रिलर करते हैं तो डर लगता है. मेरे रोंगटे अभी से खड़े हो रहे. Without further ado, please join me in welcoming the very talented Mr. Sharman Joshi, ladies and gentlemen. Very, very warm welcome, Sharman. Great to have you on the show. Thank you. Let's start with the most obvious question. Let's start first with establishing our relationship. Yeah. My brother-in-law, my sister's husband. Yes. And this is the first time we are doing something like this. We've never done anything on camera. So I'm very excited. Thank you, RiteBite Max Protein, for having us together. So let's start with the most obvious questions. ये सवाल जो है हर एक्टर से पूछा जाता है क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है. What does fitness mean to you? Compulsion, a need that I cannot afford to ignore. For me, my fitness is, if it was not for the profession that I'm in, it would be more sports related. I've always been a sports person. Right. I've always enjoyed my time at school playing cricket, volleyball, and likewise during You're the college. captain of the Yellow House. Yeah, Yellow House captain, Tower House captain, and so that's my space. That would have been my space if I didn't require this kind of fitness. Right. But since I'm an actor, and it kind of becomes a need, like I mentioned earlier. So it's more focused. It's more look aesthetic on screen, aesthetic, and in terms of the number of times I do my workout is more religious. I have it in place in order, unless of course if I have to put on weight for a character, Right. which on a couple of occasions I did, and thereafter now I've sworn never to do that again. It's very difficult to get back. Yeah. I always remember I've known you since you were 18, 19. You've always been into fitness, some sort of fitness, or have you evolved into it because you're an actor? The idea of getting into there at that age was heading towards my goal of being this actor that I wanted to be, to the gym specifically. So, like I mentioned, otherwise I'm a person you've been pretty who's active. pretty active in terms of sports. Were you always kind of pro gym, or did you think अरे यार आज भी gym जाना पड़ेगा? Very important question because I have a point to make. आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि अरे यार आज भी जिम जाना पड़ेगा. I hate going to the gym. It's not my space, but I have to. यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, काफ़ी Gen Z वाले लोग देख रहे होंगे. It's not important whether you go to the gym or you go to the playground. What is important is that you're healthy and you follow some sort of routine which burns your calories, which helps you live well, which helps you look good. And I think it translates into confidence, because when you look good, whether a lot of people tell us that अरे आप लोग तो एक्टर हैं, आपको तो करना पड़ता है. ऐसा नहीं है. आप मान लीजिए किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, आप जब घुसते हैं आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप इजीली वो वेयर सेल कर सकते हैं जैसे हम अपने आपको सेल कर रहे हैं. सही बात है. Another important aspect of fitness and wellness is which people actually disregard. जिम में जाके बहुत मेहनत करते हैं. Nutrition and diet. What are your tips on that? From what I understand, nutrition forms the largest part of your
workout regime. Workout meaning including nutrition and actually physically working out. I think 60 to 70% relates to what you're putting into your body. And thereafter, the workout that you do will make any sense, because the body is magical and there is only that much that needs to be done. And especially because you mentioned about Gen Z and the kids of today, the awareness of physical fitness is even stronger. When we were there, it was there, but yet kind of rising in the dark, trying to find out little pieces of information on that. Tabhi net bhi nahi tha. Yeah. Now, at this point of time, with all the experience and time spent at the gym, I think if you can minimize the use of these products, because you will be surprised with what your body can do. I did not believe that, but now that I've experienced it, now I can share that with you, whereby which I've been working out of late for the past 5 months, and I put on weight for a role. And I have shared all of that on this sheer, clean, good food. Of course, monitored by my trainer, who was giving me only that much amount of protein to be taken, because you need that to burn your fat. But products, as far as possible, stay away from it. You mean the supplements that people kind of use? Yeah. In fact, that was a question I was going to be coming to later. लेकिन अब तुमने इसकी बात छेड़ ही दी है, तो मैं पूछता हूँ. बहुत सारे आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिटनेस गुरुज हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्हें ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, और वो लोग क्विक फिक्स, आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्विक फिक्स लेना चाहते हैं ताकि वो उस वैसे बने. वो नहीं जानते कि कितनी मेहनत करता है ऋतिक रोशन. और शूटिंग अ फिल्म विद ऋतिक, व्हिच even his food is weighed in exact quantities के इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब है, इतना फैट है. लोग फैट खाना बंद कर दिया है लोगों को ने, क्योंकि उनको लगता है कि फैट खाएंगे तो हम फैट हो जाएंगे. It's a myth. It's not that. Your body needs fat. In this scenario, would you ever recommend a young kid or a youngster who's in his teens or just out of his teens to ever depend on these exterior helps to build a body? Definitely not. I don't think one should go down that path. It's a big no-no. It's messing around with the system of the body, and some way you'll have to pay some sort of a price, which is not worth it at all. Life is beautiful and it has to be lived and enjoyed. And of course, you have to keep yourself fit, and there are many ways to do that. And there are such good professionals now who have studied this and what exactly is required for your body in terms of natural foods, which can help you support and build the kind of physique or body that you want to. Basically, कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा खाना खाएं, थोड़ा बहुत प्रोटीन स्नैक्स लें ताकि आपका प्रोटीन एलिमेंट हाई रहे डाइट के अंदर, और मेहनत करें. इससे बॉडी बनती है, इससे बॉडी नहीं बनती है, और अगर बन भी जाती है तो आपके अंदर का सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है. So the other thing that I want to ask you, which is good, is what is your go-to meal in this packed schedules of yours? और recently तुम इतना काम कर रहे हो, touch wood, तो you have to be healthy also, craving भी होती होगी. What is your go-to meal? कि अभी फटाफट चलो ये प्रोटीन स्नैक चाहिए या प्रोटीन चाहिए? If I'm at work, तो मैं पूरे दिन का खाना अपने साथ ले जाता. पूरे दिन का? हाँ. मतलब 3-4 मील जो खाने, जो भी जितने भी मेरे मील्स हो, वो सारे गिना के by the measure आजकल, because I was in a desperate need to lose my fat as fast as possible. और उसके अलावा जब घर पे हूँ, as and when मतलब a certain amount of intake of protein is required, वो मैं achieve कर लेता हूँ. In spite of, sometimes time being the challenge, you don't have the time to eat the food at the right time. Right. Like I said, I have a trainer who's a professional. Who's studied diets and sports nutrition. He understands it technically. I'm just following his advice. Okay. Life has become simpler. जो भी आप करें, आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कोई गुरु हो. हर चीज़ में गुरु होता है. आप स्कूल जाते हैं तो टीचर होता है, कहीं नौकरी करने जाते हैं तो मेंटर होता है. फिटनेस में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिम में घुसते ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देगा और वो लोग वो सारी चीज़ें शुरू कर देंगे. अरे तू ग्लूटामिन क्यों नहीं लेता है, तू ये क्यों नहीं लेता है, तू L-कार्निटीन क्यों नहीं लेता है. भाई, जो मेरे लिए काम करता है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे, और ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए काम करे. मैंने अभी कुछ देर पहले ऋतिक की बात की थी. दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद समबडी हु इज अ एपिटमी ऑफ फिटनेस फॉर मी. आपने कई आला कलाकारों के साथ काम किया है. वो वेरी वेरी फिट. अक्षय है, आमिर है,
अजय है, इन सबके साथ काम करके कभी आपको लगा कि यार इसने मुझे प्रेरित किया कि आई वांट टू गेट बैक टू फिटनेस और समथिंग लाइक दैट, और एनी स्टोरीज यू हैव व्हिच आर पर्सनल? आमिर के साथ तो हमने बहुत मस्ती की है। फिट बॉडी के साथ हम सेट पे एंटर हुए और उसके बाद वो बॉडी की हमने बर्बादी की है, खाना पीना ऐसा खाया है। और मैं तो सुना वो बहुत डिसिप्लिन है। वो एक फेज था जब हम लोग सब मजे कर रहे थे। वी वर प्लेइंग द रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द फिल्म्स आई हैव डन विद आमिर, रंग दे बसंती और थ्री इडियट्स। तो राजू सर स्पेशली, राकेश ऑल्सो, बोथ ऑफ देम इन फैक्ट वांटेड अस टू लुक लाइक स्टूडेंट्स। करेक्ट। तो जो हमने सिक्स पैक्स विक्स पैक्स, हाँ वो सब को मतलब कोई मायना ही नहीं था, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ they saw their characters in the film. College kids, they need to look like college kids. मैं तो मतलब 1 साल की शूटिंग हो गई होगी थ्री इडियट्स की, और जब पहली बार मुझे कॉल आया राजू सर का कि यू आर डूइंग दिस फिल्म, आई वाज सिटिंग इन द जिम। बोले कहाँ पे है? मैं जिम में हूँ सर, और मैं सिक्स पैक फॉर्म में जाता था। हाँ। बोले बेटा आज तेरा ये लास्ट दिन है जिम में, इसके बाद तू जिम नहीं जाएगा जब तक ये पिक्चर कंप्लीट हो गया। ऐसे ठीक है सर। मैं घर पहुँचा और उसके बाद मैंने उसको बोला, जाते वक्त मेरे ट्रेनर साथ में बैठा था उसकी ऑफिस में, हम लोग ऐसे ही गप्पे लगा रहे, ऐसे दोस्त आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, 1 साल के बाद मिलते हैं हम। तो कहने का मतलब कि बहुत मस्ती आ गई है उस वक्त। अभी आगे जाके होपफुली कोई ट्रेनिंग करते वक्त, उनके साथ काम करते वक्त, चाहे वो आमिर हो, अजय इज ऑल्सो वेरी फिट। अक्षय तो खैर नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस, और वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, ये वो फला ढिमका, अपना 4-5 बजे उठ के वर्जिश करते हो। तो इंस्पायर किसने किया? The one who really got this into, we understood, oh, wow, oh, this is quite crazy, and this how important this is to play characters. I think Salman Bhai. That's when I first registered that. Then I felt that this is also very critical, crucial. Even if you don't be in the six-pack form, because you, I was not getting to play those kind of characters. एक बार सिक्स पैक बोल गए, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर इनकी दिखाता हूँ जिसमें आपको 8 पैक नजर है, because I remember that time and I remember that photograph. Yeah. And I was actually angry with you that you didn't send it across any publication, and I think that's the best form you were in. Yeah. I'd worked very hard. Yeah, you worked very hard. It was crazy. So I knew what it takes to get there. I just wanted to know for my sake. There was no film, there was no motivation that way, but the motivation That's also very important, ना? Motivation हो बहुत जरूरी है, बहुत critical किसी है। फिल्म के लिए करते हो तो आपको मालूम है हमको 3 महीने में रेडी होना है। मेरी भी बॉडी थी, ये भी देखिए, इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन थी। अब जो आपकी करंट स्थिति है जी, 3 बच्चे तो हैं, उनमें से जो 2 है ना, वो तो कमाल के शरारती है। यू कांट कीप अप विद देयर एनर्जी in today's world when you're looking at so much unhygienic food, whether it's burgers and pizzas and packaged food and fast food. What is your advice to them, because they definitely need that energy? How do you tell them, and do they listen to you? Fortunately for the kids, I would say, प्रेरणा मेरी वाइफ और मुझे वो अवेयरनेस आ चुकी थी कि यार दिस नेचुरल फूड, क्लीन फूड इज द वे फॉरवर्ड। और जब से ये लोग छोटे थे तब से लेकर आज की तारीख में वो सारे अवेयर है कि व्हाट इज गुड फॉर देम और नॉट व्हाट इज नॉट। Oh really? उसमें से मेरा एक बच्चा जो है, वन ऑफ द बॉयज, इज टू वेरी पर्टिकुलर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ पैकेज फूड स्पेशली। He doesn't touch them. He doesn't touch it? No, not at all. And my other boy is also into fitness. He loves his workouts. He is in love with his workouts. So I said, तू मुझ पे तो नहीं गया है। ये मैं यही बोलने वाला था कि अक्सर लोगों को, जैसे शर्मन ने कहा, ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उसको जाना ही नहीं होता है। जिम जाने से, वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स फ्लो होते हैं और आदमी खुश भी होता है। लेकिन जो भी आप करें, जिम में करें या फील्ड पे करें, खुशी खुशी करिए। You'll be doubly happy when you finish. Yeah, am I right? That's true. You'll be doubly happy. Talking about happiness, and now we're only not going to be talking about physical might and strength. We'll also be talking about mental strength. So I feel that I was much luckier because there was Instagram and Facebook and Twitter and this and that wasn't there. With so much of information, 90% toxic information. अभी आप Instagram खोलो तो सुबह को खोलते कोई किसी को गाली दे रहा है. Nameless, faceless people. Yeah. What is your advice to, again, Gen Z? How to intake social media? Consumption कैसे करना चाहिए? क्योंकि छोड़ने वाले तो नहीं है. And छोड़ना भी नहीं चाहिए. We have to keep up with time. We have to understand what is going on, what is not going on. Correct. All of us, at whatever age we are. So, but give us stipulated time. That's the best way forward, I feel. And be very strict on that.
whatever, half an hour, 45 minutes, 1 hour, 2 hours if you can afford to give. So follow that strictly and then step out of it. Then don't touch it. I generally like to watch hectic stuff I watch during the day. And things which are more nice, kind of calming, informative in a peaceful manner. Various from positive. Anything else that just keeps me at peace, makes me at peace. You see That I watch during the night for a bit, like a 10-minute. That's a damn good tip. It helps you. क्योंकि रात को जब आप एक तो स्क्रीन देखते हो तो आपकी आंखें, आपका सिस्टम अंदर से बदल जाता है, आपको पता नहीं चलता है. टीवी देखो, कोई भी ब्लू स्क्रीन देखो. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद आप इंस्टाग्राम पे कुछ गलत चीज़ें देखें अपने बारे में, कोई दोस्त आपसे नाराज़ है, वो आपको कुछ बोल दे. अगर किसी ने आपको गाली दे भी दी, ये याद रखना कि वो गाली कल तक नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ रहने वाला नहीं है. अगले दिन भूल जाएंगे लोग, काम पे चले जाएंगे. सो डोंट लेट इट अफेक्ट योर मेंटल स्टेबिलिटी इज वन थिंग. अच्छा, सीरियस बात के बाद एक मस्ती वाली बात. ये सब तो हो गया, हम लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत डिसिप्लिन है. तुम तो मतलब अलग लेवल पे हो. मैं कभी कभी चीटिंग कर लेता हूँ, लेकिन तुम जब चीटिंग करते हो तो व्हाट इज योर फेवरेट चीट मील? बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू कम काइंड ऑफ शॉक इट and then go back to the discipline. Yeah. What is your favorite cheat meal? So, chicken makhan wala. I had a feeling we'd say that. Biryani. And I enjoy my drinks, so sometimes a couple of drinks. Drink से याद आया, और आमिर से याद आया कि आप लोग एक सीन कर रहे थे, आई थिंक रंग दे बसंती में. जी. और 3 Idiots में भी. और 3 Idiots में भी था. और एक ऐसे सीन में आप तीनों ड्रंक हो गए थे, वो सीन ही नहीं हो पाए. क्या सच है? ऐसा हमें बोलते हैं यूनिट वाले. अच्छा, वो लोग बोलते हैं, आपको पता नहीं. आज तक हम लोग यकीन नहीं करते उस बात, और आपको याद नहीं है. लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई आउटसाइड ऑफ द फिल्म दैट वाज बीइंग शॉट. जहाँ पता ऐसे शूट किया अपना बिहाइंड द सीन वाले ने कि भैया रील खत्म हो गई है, अब क्या करेंगे ये वो. बिकॉज हम लोग डायलॉग्स भूल रहे, हम लोग डायलॉग्स नहीं भूल रहे थे. थरो प्रोफेशनल. ऑफ कोर्स इधर उधर थोड़ा हो गया होगा शायद. बट यू ऑल गॉट inebriated, is that a fact? Not literally, but reasonably so. Reasonably. At a couple of drinks kind of a high. Maddie was damn cute. उसमें कहानी है वो थी कि वैन में हम लोग बैठ गए थे बिफोर द शूट, आमिर एंड मी. Maddie had somewhere to go, तो वो थोड़ा लेट आया. तो आमिर एंड मी were already a couple of drinks down, and Maddie आया and I said we are having a third and you have to catch up. Maddie had his 2 drinks very quickly. Oh God! The third drink we carried to the set, and by the time Maddie reached the set, one line he said in that scene, whenever you will see it on those steps, and it's pretty much in the beginning of the scene. And the way he said, I know, because I know Maddie fairly well, I know that happened because of the alcohol. The alcohol, and it was hilarious, but it looked fabulous. ये जो मैडी की बात कर रहे हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त है, one of my best friends, आर माधवन. और उनके बारे में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 2 ड्रिंक के बाद he has left the building. He has left the building. His capacity is very low, which is not a bad thing. And I never thought I'll address Sharman as this, but I have to ask you, as a veteran actor, let's say as a veteran actor, what are your views on overall wellness? Mental, physical, what are your thoughts and what should people take away from this conversation? Yeah, keep things simple. And it's very complicated to keep it all simple. Yes, correct. In terms of your thought process, in terms of how you want to live forward, in terms of how you want to achieve your goals, everything has to be done, but with the least complications possible. Don't make it rocket science, basically. Yeah, don't make it rocket science. Don't stress too much about it. Have a goal in place. If you don't achieve it, I would think, this is what I practice for myself. If I don't achieve it, I should look back and say that, okay, I didn't achieve it, no problem, but at least I put my best foot forward and it did happen, and be at peace with it. Because we are all competing with each other in this day and time, and it's all put into your face. But हर चीज़ को एक दायरे में रख करके for your own sanity, वो I think बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I think this is something that all you guys listening, ladies, gents, any age, you should keep this in mind. There is a very interesting segment now
Don't worry, it's not rapid fire. Ah. No. Achha. No, it's not that. It's called the Keep Going segment by RiteBite Max Nutrition. The question is that you kind of, it's a long life, it's a long career. You've been here for 30 years. Before that, you've been doing theatre. इतने सालों से आप acting कर रहे हैं. What is that keep going mantra of yours? Is somebody inspiring you to keep going? Is it something in your own life? Of course, I know that we all have responsibilities, so we have to keep going. That's obvious. We will talk about that. उसके अलावा क्या वो चीज़ है which embodies your mantra of keep going? I think mostly I get driven by the fact that I get something in terms of a script and I get a character which I get so excited about. Actually, that's all that keeps me going. And when things are not happening accordingly, where I'm not getting the kind of characters or the kind of work that I would like to ideally get. I heard recently, my mantra was, मैंने तो अपने instinct पे decide किया था कि अगर नहीं हो रहा तो बैठेंगे देखेंगे आएगा. But हर बार ऐसा नहीं हो सकता है. Sometimes you have to move forward and make things happen. Oprah Winfrey said that her biggest advice to her kids are, if you don't know what to do, just sit back and do nothing till you know what to do. You're confused, you're not sure, and there are many times all of us have that moment. The best thing is not to do anything. Just wait. The time will come. Chill. The time will come. Clarity will come. Come to you on its own. I believe in God and I believe in the superpower. I think that's a fantastic piece of advice. Yeah. Because when you don't know what to do, क्या करोगे? उल्टा ही कर दोगे. खिचड़ी गलत पका दोगे. Yeah. Just wait it out. I don't think that we can end this podcast on a better note. Whoever has watched this, you have obviously seen Sharman's work. You have seen his changes. A lot of challenges he's faced in his life. Resilience is something that I associate with Sharman. जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को फिटनेस के बारे में, वेलनेस के बारे में, एनीथिंग, अपनी फिल्मों के बारे में, या क्या देखना है, कुछ प्लग करना है, वो भी कर सकते हो. बस यही कहना चाहूँगा कि love is the most important thing. छोटे-छोटे moments in life, that is the most important thing. COVID has taught us a lot of good things. Appreciate the smaller moments. The bigger moments so once in a while आते हैं, कहाँ wait करना है उसके लिए. छोटे moments है जियो, उसमें ही मजा है. That is life for me. So guys and girls, with this we end this fantastic episode with Sharman. Well, now you guys know a lot about his fitness choices, his diet plan, and his views on fitness, as well as insights on how to be fit. It's pretty simple actually. Thank you for watching this healthy podcast. Stay connected with us for many such healthy and nutritional discussions. I'm your host, Rohit Bose Roy, and you've been watching Unstoppable, powered by RiteBite Max Protein. Because like I said, it's all about having the right amount of protein. Until next time, stay healthy and make sure you'll get the maximum nutrition with Max Protein. See you soon.